And we are going live with our editor, Jitarth Jai Bharadwaj, who is presently at the Kali Mata Temple in Craigieburn. Jitarth, what's the update on our story that we did yesterday about Melbourne's Kali Mata Temple being threatened with cancel your bhajan puja or face consequences? What's the uh, update on everything that you've got here? See, Amit, what we reported yesterday, let's move forward to today. 24 hours after what we have reported, a lot of Indian Australian community has come in support of Kali Mata Mandir and, of course, the priest here. I must tell you, the mood is upbeat in terms of what Australian Hindu community or Victorian Hindu community is saying. They are saying we'll be there at temple in very large numbers. I'm told that temple has been receiving calls continuously of support, and people are telling them that they'll be there on 4th of March to support the program and participate in Bhajan Puja. With us is Acharya Bhawna, who is priest to Kali Mata Mandir. Let me put it to her. Acharya, how are you coping up? आप कैसे जो कुछ भी हुआ आपके साथ पिछले 15-20 दिन में, उसके बाद आज आप कहाँ हैं, कैसे कोप कर रही हैं उससे? जय माँ काली सारे भक्तों को जी। पहले थैंक यू सो मच जो मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला मेलबर्न से और बाकी जो पूरा ऑस्ट्रेलिया से मुझे सपोर्ट मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। और फंक्शन 4 मार्च को ही हो रहा है। कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं और रात को 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। और जैसे हमने पहले तैयारी कर रखी थी बिल्कुल ऐसे ही प्लान के साथ सारा प्रोग्राम होगा। और हम पूरा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी का की भजन कीर्तन मंदिर में होने वाला है। और आप सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप बड़ी मात्रा में पहुंच के आप इसमें साथ दीजिए। Amit, I'll shun the negativity and go towards the positive points, probably what Acharya Bhavna wanted to tell us. Bhavna जी, ये बताइए कि अब आप प्रोग्राम में करीब 15-17 दिन बचे हैं, तैयारियां क्या हो रही हैं, क्या क्या होने वाला है, उस प्रोग्राम के बारे में बताइए जिसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं आप। जी प्रोग्राम तैयारियां पूरे जोर शोरों से चल रही हैं। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, कोई स्टेज देख रहे हैं, कोई सिक्योरिटी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और सारे हमारे सभी भंडारा देख रहे हैं कि उस दिन फ्री फूड जो हम करते हैं हमेशा, तो उस दिन भी बड़े बड़े लेवल पे जो भंडारा बनाया जा रहा है। और सारी तैयारी हमारी अप टू डेट है और सब कुछ हमारा जितने भी भगत आते हैं सबके लिए हमारे पास पूरे अरेंजमेंट्स। आपने जो इंटर स्टेट से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया जो रीजनल अलग, तो वो क्या है जरा वो बताएं। जो लोग जैसे हमारे कुछ लोग सिडनी से आने वाले हैं, पर्थ से, ब्रिस्बेन से आने वाले हैं, तो क्योंकि वो बहुत दूर से आने वाले हैं तो उनके लिए हमने यहाँ रहने का भी अरेंजमेंट्स करवाए हैं ताकि वो अच्छे से फ्रेश होकर तैयार होकर भजन कीर्तन में आप वो पार्टिसिपेट कर सके। और अगर रात को जैसे जो बच्चे आने वाले हैं या फीमेल्स आने वाली हैं उनके हमने रहने के लिए भी करवाया है ताकि वो इजीली यहाँ पे रह के अगले दिन अपने स्टेट को वापस जा सके, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रहने में, कंफर्टेबली वो यहाँ पे रह सके अपने बच्चों के साथ। तो इसका हमने पूरा अरेंजमेंट रखा है। मुझे ये भी बताइए कि इस श्याम खाटू जी के इस भजन प्रोग्राम में होता क्या है? मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले नहीं देखा उन्हें कैसे समझ में आए? जी जो खाटू श्याम जी हैं वही तो सब जानते हैं कि कलयुग का अवतार है वो। और जो उनका भजन कीर्तन है तो वो मेनली कृष्ण जी का और खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन, बालाजी का भजन कीर्तन। और मैया जी तक तो साक्षात मंदिर है माता काली जी का, तो यहाँ पे वो तो स्वामी है इस मंदिर की, तो उनका भजन कीर्तन के साथ। और क्या होता है कन्हैया मित्तल जी क्या करते हैं वो आपको आके ही पता चलेगा कि वो किस चीज के लिए मशहूर है, वो किस प्रकार से आपके कहते हैं ना कि आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं भजन कीर्तन से। भगवान को देखना हो तो शायद इसीलिए इनका इन सब सिंगर्स का नाम इतना ज्यादा होता है कि वो आपको वो एहसास करवा देते हैं उसके। Amit, let me tell you, by coincidence, I just bumped into this young man, and his family has been doing Khatu Shamji's program for 4 generations, if I'm not wrong, for 4 generations. Let me ask him what is the mood, what is he going to do on that day, and what has happened in last 3 weeks means for you. जय श्री श्याम सभी को। सबसे पहले तो बाबा शाम का जागरण बहुत ही उत्सुकता से और बहुत ही मन भाव से बहुत ही उच्च लेवल पे यहाँ पर बनाया जा रहा है।
जिसमें बाबा का संकीर्तन देखने लायक होगा और बाबा का श्रृंगार जो कि बहुत ही अपने हाथों से बनाया जाएगा। जितने भी फूलों की माला होगी, श्रृंगार होगा, प्रसाद होगा, सब कुछ अपने हाथों से बनाया जाएगा। हम जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी हैं, चाहे वो ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, चाहे बाहर रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में बाबा के कीर्तन में उस दिन पहुंचे और अपने हिंदू एकता को सब दिखाएं और सब मिलकर बाबा का कीर्तन को संपन्न करें, ताकि हम लोग अपने जितने भी इष्ट देव हैं सबको भगवान को पूजा करें और अपने आप को एक एकता दिखाएं। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू एकता नहीं है और हिंदू एक साथ नहीं रहते, यही सबके पास एक मौका है कि हम सब मिलकर आए और इस प्रोग्राम को और इस कोशिश को और इस भावना दीदी की पहल को आगे लेकर जाएं। और सबसे बस यही विनती है कि बड़े से बड़ी संख्या में यहाँ पे मंदिर में पहुंचे और बाबा का ये कीर्तन सफल बनाए। मुझे ये भी पता चला कि खाटू श्याम जी का जो प्रसाद होता है वो बड़ा अलग होता है। हाँ, तो जरा वो बताइए कि किस तरह की तैयारियां। अच्छा, चूरमा के भी एक्सपर्ट ही हैं। चलो भाई, इनसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। जो खाटू श्याम जी हैं उनको कहा जाता है वो कलयुग के अवतार। आज से हजारों साल पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध के अंदर पांडव और कौरव दो सेनाएं आपस में लड़ रही थी, तो उस I think we lost Jitarth there, but it is very clear that the event is going to be a magnificent one, specifically even after all the hatred towards the people that the organizing committee of the temple is getting. I'm trying to connect Jitarth. Meanwhile, what you need to know, our viewers, is that the Kali Mata Temple has been threatened. It was asked to cancel, its bhajan-puja or face consequences. I'll just message Jitarth to be back. Yes, Jitarth, I think we have lost you. You need to come back through the link. And Priest Bhavna got a call from an unknown number which threatened in Punjabi, and it very clearly said that you listen carefully, cancel your bhajan puja program, or get ready to face consequences. Now, Bhavna thinks that the caller had Amritsari Jalandhar accent in Punjabi language, which because she also belongs to the Punjab region, she can understand that this was a totally accented Punjabi, maybe belonging to the countryside. She pleaded with him that this is a place of worship, specially revered by the Punjabi Hindu community from not just Victoria, but also New South Wales, ACT, and even some people in Western Australia. So she pleaded, and she even told the person that even Guru Maharaj Ji, Guru Gobind Singh Ji used to pray to Kali Mata. So why would you like, or why would you love to come and fight with us? And this is the only thing that Hindu community, particularly Indian Hindu community, is doing right now. They are just pleading with these people to come to their senses. While the caller was still intimidating and he kept on going, my job is to warn you. If you don't listen, it's up to you. We will show you what we can do. And that's something that the Indian community, and I'm talking about all Indian community here, I'm not talking about any particular religion here. Indian community in Australia has been seeing this for some time now, that there are perpetrators who are using their political, pseudo-political religious ideology to target peaceful communities. I think somewhere the police and the authorities have lost the plot because they are not familiar with these kind of ideology, particularly Khalistani, and therefore unable to take action against them. Because most of the time, as we have been saying through the Australia Today, that these ideologies are hiding behind democratic values which they do not represent, human rights which they do not represent, uh, you know
aids religious ideologies which they do not represent. So viewers, I think in fact we need to be clear and draw a line between the two groups of people belonging to the same community. It can be Sikhs, Muslims, Hindus, Christians. So hatred has no place in a multicultural community. So we are connecting again with Jitarth, and I'm bringing him. And Jitarth, welcome back. We lost you there. I think you went to eat some prasad, which is not Uh, fair to people like us. And I think I'll have to personally come to witness the grand night on 4th of March and get blessings of Khatu Shamji, while Nikhil can, feed us the bhandara and the prasad. I had, while you were away, I was giving some kind of background to the whole incident at Craigieburn Kali Mata Mandir, and what at the Australia Today, we have been saying that this kind of hatred, this kind of pseudo ideologies have no place in a multicultural society like Australia, be it the crazies in the Muslim community, Sikh community, Christian or Hindu communities, they are not welcome. And a, this is kind of a universal voice that we have been hearing throughout. But there are some groups that are trying to whitewash, trying to sweep these kind of ideologies under the carpet by misinforming the authorities, presenting them as democratic, politically viable ideologies. And somewhere the Victorian and the Australian authorities understand this, but they have been pretty laid back in tackling this. Coming um, back to Khatu Shamji's grand event that's going to take place on 4th March, what can Nikhil tell us more about it? How many people are going to come, from where they are coming, who's going to sing? Am I allowed to sing some bhajans, Nikhil? Let me put this question to him. I'm sorry about before. It's 40 degrees almost here in Melbourne, so you can imagine the camera went off because it was overheated right now. But we are back nevertheless. Nikhil, Amit wanted to know. So, is he also allowed to sing a bhajan when the program happens? How does all, like, you are a pro into this? So how it happens if Bhakt want to sing something? Do they allow or something? जो भी है बाबा शाम का जितना भी कहीं भी संकीर्तन होता है, संकीर्तन का मतलब यही होता है कि सभी भक्त मिलकर साथ में संकीर्तन करें। संकीर्तन का मतलब यही है कि जितने भी हमारे भक्त वहां पर बैठे हैं सारे मिलकर भजन गाएं और बाबा को रिझाएं। हम किसी भी इंसान को मनाने या उनको रिझाने नहीं है। हमारा मेन मोटिव और जो मकसद है, हमारे बाबा शाम को, बालाजी महाराज को, काली माता को रिझाना है। जो सभी जब सारे भक्त मिलकर बाबा को रिझाएंगे, भजन गाएंगे, उसी को संकीर्तन कहते हैं। और इसी संकीर्तन को हमारे को विश्व विख्यात करना और हमारे जितने हिंदू भाई एकता सबको यहाँ पर बुलाना है, ताकि हम इस संकीर्तन को विश्व विख्यात करें और हमारे लोगों का नाम हो और बाबा को हम रिझा सकें। कीर्तन भजन सब मिलकर गा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Amit, you were also talking about the prasad. Probably he's the right person. Probably you are aware of the churma they make. How do you make that churma? देसी घी में कैसे करते हैं? बाबा का जो प्रसाद होता है, जो मेनली बाबा को प्रसाद चढ़ता है, बाबा को चढ़ता है बूंदी के लड्डू या बाबा को चढ़ता है चूरमा। जब भी बाबा का जो मेन स्थान है वो है खाटू श्याम जी, राजस्थान में। रिंगत से 17 किलोमीटर है। बाबा का नवनिर्माण मंदिर अब बना है, क्योंकि अत्यंत भीड़ होने के कारण बाबा का मंदिर पिछले 3 महीने के लिए बंद रहा था, जो मेन मंदिर है बाबा का। Okay. तो अब दोबारा जो मंदिर प्रशासन की मदद से दोबारा मंदिर तोड़कर नवा बनाया गया, तो अब दोबारा 3 महीने बाद मंदिर खोला है। और दोबारा भीड़ भरने की वजह से तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहां पर, 5-5, 10-10 लाख लोग वहां पर आते हैं एक दिन में। अगर मान लो अगर एकादशी है तो उस दिन तो भीड़ का कुछ पता ही नहीं कि कितनी भीड़ आएगी। और रही बात चूरमे की, बाबा का प्रसाद जो चूरमे का बनता है, जो आपा पूरियां बनाते हैं, तो हार्ड पूरियां बनाकर उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर उसके अंदर आपा कुछ भी जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, उनको ड्राई फ्रूट को बीच में डालकर देसी घी के अंदर, बेसिकली देसी घी के अंदर बनता है। हम वी कांट मेक दैट इन लाइक डालडा और अनेक वेजिटेबल ऑयल। ये जो बाबा को जो भोग लगता है उसको देसी घी में पूरियों को तल के, हार्ड तल के, उसके बाद उन पूरियों को मिक्सी ग्राइंडर में, या बेसिकली जैसे पुराने जमाने में होता था, लोग हाथ से उसको बुरा बनाते थे। Amit, this young man seems to be really, really good in terms of making the prasad. I
I can see that, with the hand gestures and everything, he's actively going into the whole process. But one of the things that is amazing is Nikhil, एक तो हिंदी सुन के बहुत अच्छा लगा. यहाँ जो हिंदी बोलना जानते भी हैं वो खास तौर पे ये बोल देते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती और छुप बिल्कुल. जाते हैं. अभी हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है फिजी में, तो सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सब लोगों को. और जो फिजी में हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इसको, जो श्रोतागण हैं, उनके लिए भी नमस्कार. और निखिल, थोड़ा ये बताएंगे कि कितने लोग आने का आपको लग रहा है, अनुमान है कि कितने लोग आएंगे इस? अमित, आचार्य भावना भी आ गई हैं. बिफोर वी फिनिश, उनसे पूछते हैं कि कितने लोग यहाँ आने वाले हैं और जी. क्या तैयारियां हैं उनकी. कितने लोग आते हैं आपके बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे ये बड़ा प्रोग्राम है? जी, लास्ट से जैसे शिवरात्रि है कल, तो लास्ट शिवरात्रि तो हमने 5000 प्लस पीपल हमने किए थे, मतलब एक टाइम पे नहीं, जी आना जाना 7 दिन जी जी, पूरे दिन में 5000 से ज्यादा लोग आते हैं. हाँ जी. तो बाकी शाम जी कृपा कितने लोग आते हैं? हाँ जी. She is being a little modest, Amit, but जिस तरह का अपबीट मूड मुझे दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि जैसे हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं लोगों की दर्शन करने के लिए और अपने मनपसंद भजन को, पूजा को करने के लिए. Let's chalk it out from here, Amit. Probably what we can give is best wishes for their program, and uh, everything should go very smoothly, and a large crowd, Indian Australians, enjoy and get blessings of Ma Kali right behind me, and Khatu Shyamji. Amit? Jitarth, in the light of the threat, has the Victorian police and political authorities have given any assurance to the Kali Mata Temple management that this function should go smoothly? Yes, I think they have been assured that there will be a large police presence there. Cars will be traveling around. we have हिंदी में बता. हाँ जी, हमने कुछ लोगों को जैसे हमने हायर भी किया है सिक्योरिटी के लिए, तो security, a lot of security persons have been hired privately, and police has also assured. And Amit, I can also tell you right now, when we are talking about all this, there are 4 Victorian MPs. They are in India, visiting temples and meeting Indian politicians. However, I kind of don't see that kind of support by Victorian parliamentarians here on ground, and that is quite irony. It is indeed ironical, Jitarth, that any photo op with the Indian community is welcomed, but any statement when the Indian community, particularly the Hindu community, is going through stress and a turbulent time, they kind of hide behind template statements, waiting for their advisors to draft it for them rather than saying something truly that they believe in. As I've been saying at the Australia Today, everyone needs to take a side. They have to confront these kind of violent extremist ideology so that peaceful Australians can democratically follow their rights and contribute towards the Australian and, in fact, the global Indian diaspora. Jitarth, Acharya, Bhavna ji, Thank you. And Prasad Master Nikhil, I would like to thank you for participating. Thank you, Jitarth. Thank you again. Thank you, Ahmed.